Hello, everyone. Good evening. Welcome back. Wonderful Wednesday. Coach MJ live with all of you. So, as scheduled, as we are doing this teenager month from a long time, the entire month is dedicated to teenagers. So, I want my enthusiastic parents, enthusiastic teachers, enthusiastic coaches to join up quickly so that we can start with the session, today's session. And today's session, again, it is going to be associated with teenagers, topics related to teenagers. And what we are going to discuss is also going to be a very, very effective thing. Every day we do it intentionally, unintentionally, knowingly, unknowingly, without knowing. And we have a lot of repercussion of the thing that we are going to discuss today. So my dear friends, please join up quickly so that we can start. And I am unable to wait to unfold so many secrets in front of you. So I keep asking parents a lot of questions related to this, that do you remember your teenager days when you were a teenager? आपको अपने teenage के time याद है? So the way you were during the time of your teenage, and you people have enjoyed whatever you have gone through, the struggle, the confused attitude kind of a thing, likings and dislikings. My dear friends, compare yourself and your teenage children. So you will find there will be no difference between you and your teenagers. So they are also going through the same phase. The only devil with all of us these days, and I'll say poor children, बेचारे बच्चों के साथ जो सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा भूत और सबसे बड़ा devil आजकल आ गया है, that is internet. That is mobile phone, and that is the reason why teenagers are little distracted, थोड़ा सा off track हो गए हैं, पर उनके हाथ में भी नहीं है, क्या करें, टाइम ही ऐसा चल रहा है. तो जितनी चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे. आज का ये सेशन उन पेरेंट्स के लिए है जो फील करते हैं कि उनका बच्चों से उनका इमोशनल कनेक्ट जो होता है, एक कम्युनिकेशन गैप होता है, वो बढ़ता जा रहा है. मैं बहुत सारे पेरेंट्स से बात करती हूँ और वो पेरेंट्स मुझे यही बताते हैं कि मैम, हम सब कुछ बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं, सुबह सुबह जॉब पे जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, वी डू इट फॉर आवर चिल्ड्रन ओनली, फॉर टीनेजर्स, फॉर हमारे बच्चे जो प्यारे हैं उनके लिए ही तो कर रहे हैं. बट मैम ऐसा लगता है घर में रहते हुए कि हम किसी स्ट्रेंजर के साथ रह रहे हैं, जैसे हमारा खुद का बच्चा ही एक स्ट्रेंजर बन गया है. और क्यों स्ट्रेंजर बन गया है? क्योंकि देयर आर नो फीलिंग्स अटैच्ड, दे आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड विद अस. That bond is not there, that friendship wala attitude is not there, they don't share anything, we don't share sharing caring, ye attitude nahi hai. So I feel bad about it. This situation is actually bad. आप घर में अपने बच्चे के साथ रह रहे हो, सारा दिन उसके लिए काम करते हो, और फिर भी अगर एक इमोशनल बॉन्ड की कमी महसूस हो, वो गैप बढ़ता जा रहा है घटने की जगह, तो कहीं ना कहीं फिर इस पे रिसर्च करने के बाद मैंने कई कॉजेज निकाले इसके, राइट. और कॉजेज, वी कैन डिवाइड द कॉजेज इनटू टू एस्पेक्ट्स. एक बच्चों की साइड से कॉज ये हो सकता है कि बच्चे इमोशनली आज अब ये एडोलेसेंस में जा रहे हैं, राइट. दे आर नॉट द टॉडलर्स, सो इट इज अ शिफ्ट फ्रॉम टॉडलर्स टू टीनेजर्स, टॉडलर्स टू एडोलेसेंस, राइट. तो जब वो एडोलेसेंस के फेज में जाते हैं, देयर इज अ इमीडिएट जंप. आपने देखा होगा ग्रोथ स्पर्ट आता है बच्चों में एकदम से. वो ग्रोथ स्पर्ट हमें आउटसाइड से फिजिकली तो दिखता है कि बच्चों की फिजिकल बॉडी चेंज हो रही है. इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द चाइल्ड इज ग्रोइंग फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो. अंदर से भी वो ग्रो कर रहा है, इमोशनली, मेंटली, हर तरह से वो ग्रो कर रहा है, वो हमें दिखाई नहीं देता. तो बिग कॉज इज दैट वो गैप इसलिए आ जाता है क्योंकि बच्चा, एक तो एडोलेसेंस स्टेज है ऐसी, दूसरा उसके हॉर्मोन्स, इट इज नॉट देयर चोजन बिहेवियर. माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर पेरेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड. अगर आप एक टीनेजर के मॉम डैड हैं तो इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए कि इट इज नॉट देयर चोजन बिहेवियर. बच्चों का ये चोजन बिहेवियर नहीं है, हॉर्मोन्स यहाँ पे उनको इस तरह से गेम खिला रहे हैं, राइट. तो एडोलेसेंस ब्रेन को अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर एग्रेसिव, आई अंडरस्टैंड. दे हैव फियर्स, आई अंडरस्टैंड. दे आर सेल्फ सेंटर्ड, एरोगेंट एंड एवरीथिंग. खुशी वाली बात यह है कि एवरीथिंग इज नॉर्मल. अगर ये सब चीजें आपके बच्चे के साथ हो रही हैं तो दिस इज समथिंग नॉर्मल. आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, दिस इज नॉर्मल.
अब हम बात करेंगे पेरेंट्स साइड से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, राइट? तो पेरेंट्स साइड से कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आज हम सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, राइट? वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली 2 प्रॉब्लम्स, और आगे की प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट सेशंस के लिए रखेंगे। फर्स्ट एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इंटेंशनल डिस्टेंसिंग। इसको हम कहते हैं इंटेंशनल डिस्टेंसिंग। जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के साथ इंटेंशनल डिस्टेंस बना के रखते हैं, जानबूझ के डिस्टेंस। अब जानबूझ के डिस्टेंस का क्या मतलब है? दे वांट अथॉरिटी, मोर ऑफ अथॉरिटी एंड लेस ऑफ फ्रेंडशिप। तो ज्यादा से ज्यादा अथॉरिटी रहे और लेस हमारी फ्रेंडशिप रहे। दे बिलीव, क्यों ऐसा बिलीव करते हैं पेरेंट्स? दे बिलीव दैट टीनेजर्स शुड ओबे 90% of the rules laid by the parents and should not question anything about it. 90% बात हमारी माने और should not do any question about it, and respect has to be unconditional from the teenager side. टीनेजर हमें रिस्पेक्ट करे, जो हमने रूल्स बनाए हैं 90% माने, और हमारी वो इन रूल्स को तोड़ने की तो कोशिश बिल्कुल ही ना करें। they think that they are authority and they know better than the teenagers, which is right also. और इस तरह की अथॉरिटी में तो फ्रेंडशिप का क्वेश्चन कम हो जाता है, अथॉरिटी का क्वेश्चन बढ़ जाता है। तो दे वांट मोर ऑफ अथॉरिटी एंड लेस ऑफ फ्रेंडशिप। एंड बच्चों को वो डरा के भी रखते हैं। दे बिलीव दैट फियर शुड बी देयर। बच्चों को अगर डिसिप्लिन करना है, टू डिसिप्लिन द चिल्ड्रन, अथॉरिटी एंड फियर प्लेज अ बिग रोल। ये उनकी थिंकिंग है। तो इसीलिए टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड, डिस्टेंस इज अ टूल फॉर देम। तो वो अपने बच्चों के पास ज्यादा जाते ही नहीं, उनसे फ्रेंडली रिलेशन ज्यादा रखते ही नहीं, दूर रहते हैं, राइट? सो बट माय डियर पेरेंट्स, दिस इज नॉट अ राइट थिंग टू डू। डिस्टेंस बनाना इज नॉट राइट। वाई? बिकॉज देखो, बच्चा जब छोटा है तब तो आपकी बात सुनेगा, अथॉरिटी को भी मानेगा वो, बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो अथॉरिटी को इग्नोर करना शुरू कर देता है। Authority will not work in the longer run, right? In the longer run, this problem will increase because child will not accept the authority being imposed on them by the parents. और फ्रेंडशिप हमने की नहीं, तो जब अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं होगी और फ्रेंडशिप हमने की नहीं, तो इसका रिजल्ट तो यही होगा कि बच्चे के साथ आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, टीनेजर स्पेशली के साथ आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। वी शुड नेवर इम्पोज अवर आई ऑन अवर टीनेजर्स, राइट? You are very special, I know. We all know that we have done a lot of things. We have achieved so many things in our life. We must be having lot many certificate, lot many laurels, lot much of money. We must be having a good job or good status. But we should not impose our eye on our children. बच्चे की eye develop हो रही है ना, we need to nurture that eye rather than imposing our eye on them कि I am an authority and you should listen. No, it is a wrong approach. तो फिर बट पेरेंट्स पूछते हैं, मैम व्हाट विल बी द राइट अप्रोच देन? सी, राइट अप्रोच विल बी फ्लेक्सिबल. इट शुड बी अ रूल. Fix it up in your brain. It should be a rule. Become flexible. Now, how much to become flexible? Write down this rule somewhere, that become friends but keep the final authority in your hand. You should be like a coach. जैसे हम गेम्स खेलते हैं तो हमारा कोच होता है, वो आपको सारी लिबर्टी देता है, लेकिन लास्ट का डिसीजन मेकिंग पावर अपने हाथ में, वो वीटो पावर होती है ना, वो अपने हाथ में रखता है. सो दैट वीटो पावर शुड बी देयर इन योर हैंड्स. बाकी बच्चों को आप अथॉरिटी दीजिए, आप अपने फ्रेंडली रिलेशनशिप रखिए. एंड अथॉरिटी, children should also know that my final authority is in the hand of my parents, right? So it should be a 50-50 kind of a rule. In the early childhood, you should have 50% of authority and 50% of friendship. And as your children, as your toddler is growing up, जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, टीनेजर में आता जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को, इस प्रपोर्शन को इस तरह से इंक्रीज कीजिए कि अथॉरिटी कम होती जाए और फ्रेंडशिप बढ़ती जाए, राइट? ग्रेजुअली एंड स्लोली अलाउ देम, धीरे धीरे उनको डिटैच करना शुरू कीजिए द डिपेंडेंट स्टेज से इंडिपेंडेंट स्टेज की तरफ, विदाउट डिस्टर्बिंग योर रिलेशनशिप एंड विदाउट हैविंग दिस इफेक्ट कि हमारे पापा, हमारी मॉम हमारे ऊपर अथॉरिटी जता रहे हैं, राइट? सो फ्रेंडशिप इज द गोल्डन रूल. इट शुड बी देयर. 90% ऑफ अथॉरिटी या उससे हायर डिग्री ऑफ अथॉरिटी is not going to solve your problem forever. Why? Because children, when they grow up as adults or as teenager, वो rebellion attitude आ जाता है उनके मन में, right?
सेकंड प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, पेरेंट्स दीज डेज आर वेरी बिजी. आई अंडरस्टैंड, mom, dad, both of them are working, career oriented man and a career oriented females. When they land up producing babies, when they have children, it becomes very difficult to give a quality time to your children. So we are busy filling up. This statement of mine will make you a little upset, but in this practice of filling up our bank accounts with a lot of money, we fail to fill up our emotional account with our children. So कहीं ना कहीं हम ये emotional account अपने बच्चों और अपने family members के साथ खत्म करते जाते हैं. So emotional account is equally important. What will you do with the entire amount of money with you? Tell me what you will do with it. If you don't have a happy family, if you don't have people who care for you, if you don't have people who will share their feelings with you, आपकी feelings सुनने को वो तैयार नहीं, अपनी feelings बताने को वो तैयार नहीं, तो क्या आप अपने बैंक अकाउंट में जाके अपनी प्रॉब्लम्स उनको सुनाओगे? I think no. Everybody, all of us need somebody to be there. So please take care. You maintain a good account, bank balance, but make sure that your emotional account is also at a very good level. ये खाली नहीं होना चाहिए, सगों इसको भरते जाना है. और इसके लिए क्या सबसे, जब देखो आपके पास टाइम ही नहीं है बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए, या अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ स्पेंड टाइम करने के लिए नहीं है, तो what will happen then? The bond, that relationship won't be there. So it'll result in distance then. Of course, distance bridge कब नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाएगा. तो इसका solution क्या है? See, I'll give you a golden rule. आपको ये नहीं है कि आप सारा दिन 24 hours में से आप, ठीक है, spend that time on your growth, on your progress, on the work that you are doing. It's okay. But in your to-do list, make sure that you have to spend at least 30 minutes to 1 hour, more than 30 minutes. 30 minutes का तो time आपको अपने बच्चों के साथ जरूर स्पेंड करना है, every day, रोजाना. So this you have to write it down that I want to spend 30 minutes of time with my children. लिख लो इसको. And when you are sitting, when you are there with your children, make sure that you are not on your gadgets then. Make sure that the TV in the house, in that room is not on. Make sure that you are involved in fun and loving activities. अगर आप मोबाइल पे लगे हुए हो, that is not spending quality time. You need to talk to your children, and when you talk to your children, make sure you do not land up asking questions. यही नहीं होना चाहिए आपका स्कूल कैसा था, आपने टिफिन फिनिश किया कि नहीं, आपने होमवर्क कर लिया, आपका बैकपैक हो चुका है कि नहीं. We land up asking so many questions. Teenagers पागल हो जाते हैं, वो कहते हैं यार क्या मैं, this is not fun, right? Nobody loves to be questioned so many times, right? So spend 30 minutes of time each day with your children, and make sure that that is a quality time. अगर हमने बच्चों को पैदा किया है तो आई थिंक हमने पैदा किया है इसलिए कि हम उनकी अच्छे से नर्चरिंग करें. इसलिए तो नहीं पैदा किया ना तो कि इंडिया की पॉपुलेशन में हम लोग इंक्रीज दिखाएं. आई एम श्योर इसलिए हमने बच्चे पॉपुलेशन के लिए नहीं पैदा किए हैं. वी हैव डन this thing. We have produced the babies for ourselves, for our happiness, and to give them a bright and a lovely future. So if you are far off now, some of the parents say that ma'am हम तो अपने बच्चों के साथ रहते ही नहीं है, पापा कहीं दूर रह रहे हैं, मम्मा बच्चों के साथ है. So if the father is not there or if the mother is not there, make sure you call up your children. Make sure you do a video call. और अगर मम ऐसी होती हैं जो जिन्होंने जॉब पे जाना है, पीछे से बच्चा घर में अकेला है और मॉम को जॉब पे जाना है, मम फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकती बच्चों के साथ, तो मेक श्योर दैट you leave a प्यारा सा love note for your child, a sticky note kind of a thing anywhere in the tiffin maybe, or in his book or in his notebooks or in a kitchen where you know your child is going to go. So that connection, that will build up a connection. बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ऐसे छोटे छोटे surprises अगर आप plan करते हो और इसमें आपका ज़्यादा time भी नहीं लगता, right? So if on job you are there, and or if you are not along with your kids, make sure that you do small little things. It is going to bring a big change in your children and your love life also. Love life, I'm saying, with your children, right? And if you do such kind of things with your beloved one, anyone, if you'll do it, no, I'm telling you that it is going to give you a good results. It's so easy to do it. So my dear friends, no matter how busy or occupied you are, please take out time for your family, because family is important than any other thing. So in your priority list, I think family name सबसे पहले आना चाहिए. अब बाकी सारी चीजें wait कर सकती हैं, family wait नहीं कर सकती. Each day you contribute,
each day make sure that that emotional bank account में आपने कुछ ना कुछ invest जरूर किया है. तो emotional bank account का भरना बहुत ज़्यादा important है, बहुत ज़्यादा. You must have seen people who are not very rich, जो ज़्यादा अमीर नहीं होते हैं, जो poor होते हैं, उनका चाहे बैंक अकाउंट खाली होता है लेकिन उनका इमोशनल बैंक अकाउंट इतना ज्यादा भरा हुआ होता है कि they are attached, they live like a family, they are happy, they're contented. So it is very important, my dear friends, please stay safe. And if you are interested, आज की पाठशाला में यही दो चीजें करेंगे, right? Next Wednesday I'll take up another two things that are also very important for all of you to understand. Next में लेके बस आज यही दो चीज प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये दो चीज प्रैक्टिस करते हुए आप इसमें मास्टरी हासिल कर लें, right? Now I am please allow me to share my screen so that I show you something interesting. We are going to run up a beautiful session for all the teenagers. This session is called as Knowing Teenagers Better. Can you see my screen or not? Please write down in the chat box if you can see my screen. If you can see my screen, please write down in the chat box yes or no. Very good. Okay, so here is the screen and you can see, note down the timing. This is something wonderful which is going to come up. See, negativity travels really fast and positivity takes time to travel. So something, it is my moral responsibility to tell you that somebody is going to bring up something which is very positive, which is going to come up for your students, for the teachers, for the parents, and for the teenagers. This is knowing teens better. Why I am, when I say I, that means teenagers. Why teenagers are the way they are. So it is a 4 days program designed especially for the teenagers, and the important part of this program is that the parents are also going to be a part of this program. 90 minutes of fun learning will happen every day for 4 days. The timings for this will be 3 o'clock in the afternoon till 4:30, and the dates are 28th to 31st of this month, that is March. Registration charges are 2,000. You're going to learn a lot of things. So please register. 20th March is going to be the last day for the registration. And if you register yourself after 20th, then the price is going to increase. It will be for 2,500. So you are going to learn a lot, many things in this workshop. It's my humble request. Not a request. I must say that you must be a participant in this program, because such kind of positivity wali cheezein are very less available in the market, right? And this is on the screen. You can say, you can take a screenshot also. These are the payment options: Phone Pay, GPay, SBI number. Everything is given on the screen, so you can pay accordingly. And I welcome all of you in this workshop. Please do join. And that's all. If you are not a part of my Happy Parenting community, which is a free of cost service done for the parents, where we share so many things, so many positivity early in the morning, every day related to parenting. So please join that. Number remains the same. You can send me a hi, hello, write down parenting and text me, give it to me so that I can add you in my group. So thank you, dear parents. We are going to meet once again on the next Wednesday, again with the same topic, teenagers. Please keep yourself free during this time. I'll not take much of your time. This will be only for half an hour class every Wednesday. So Coach MJ takes a leave from everybody. Bye-bye, take care, and happy parenting.